हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी कावेरी का कैनवास ऑफ सॉइल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। मैं इस पोएम को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इस पोएम को नहीं, मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 9 न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी। आप वहाँ से चैप्टर्स और पोएम्स पढ़ सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स कैनवास और सॉइल के। 3 स्टैंजा की पोएम है, आपको पता ही है। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो प्लीज एक बार पहले पढ़ लेना, बहुत ही प्यारी सी पोएम है। So first one is check your understanding. Read the poem again and complete the summary of each stanza by filling in the blanks. जैसा कि हम हर बार करते हैं, मैं केवल और केवल इस वीडियो में आपको आंसर्स बताऊंगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप आंसर्स नोट डाउन कर सको। So first is the dash is portrayed as a rich palette where gardeners dash flourish in form of dash awaiting spring. So first blank में आएगा dream, sorry first blank में आएगा आपका soil, second में आएगा dreams, third में आएगा आपका seeds. Second question है आपका the garden flowers dash into a beautiful display of different dash resembling a dash by mother nature in the light of morning. सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका ब्लूम्स, सेकेंड में आएगा ब्लॉसम्स और थर्ड में आएगा पेंटिंग. थर्ड इज ईच गार्डन इज लाइकन टू अ वाइड डैश इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड डैश थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर्स. गार्डन्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्टिल लाइफ डैश. तो फर्स्ट वाले में आएगा आपका कैनवास, सेकेंड वाले में आएगा आपका नेचर और थर्ड वाले में आएगा आपका मास्टरपीस. अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. Select the appropriate title for each stanza from those given below. There are 2 extra titles. So we have 3 stanzas. तो हमें हर एक stanza को एक टाइटल देना है, जिसमें हम फर्स्ट stanza को जो टाइटल दे सकते हैं वो है अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज. सेकेंड stanza को हम बोल सकते हैं टाइटल नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट और थर्ड stanza को हम टाइटल दे सकते हैं गार्डन्स एज लिविंग कैनवासेस. ठीक है, बाकी दो जो है वो एक्स्ट्रा है. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द पोएटिक डिवाइसेस इन कॉलम 1 टू द एग्जांपल्स इन कॉलम 2. डिस्कस योर रिस्पॉन्सेस इन पेयर्स, देन शेयर द रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. अभी ये है आपका कॉलम 1 एंड 2. मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि सारे के सारे आपको एक साथ विजिबल हो जाए. ओके, तो आप आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट का है आपका इमेजरी का है आपका फोर्थ वाला, कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स, ब्लॉसम्स, शेड्स ऑफ ग्रीन. सेकेंड है आपका मेटाफोर. मेटाफोर का है आपका सिक्स्थ वाला, गार्डन एज अ पेंटिंग, प्लॉट एज कैनवास, सीड्स एज ब्रश स्ट्रोक. थर्ड है राइम. तो राइम का है आपका सेकेंड वाला, ए बी बी. फोर्थ है टोन, उसका है फर्स्ट, अप्रिशिएटिव. फिफ्थ है मूड, उसका है सेवेंथ, जॉयफुल. सिक्स्थ है स्पीकर, उसका है फिफ्थ, अ गार्डनर. सेवेंथ है एलिट्रेशन और उसका आंसर है थर्ड वन, ब्लॉसम्स ब्लूम. अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप सारे के सारे एक बार नोट डाउन कर सके आंसर्स. हर के आगे मैंने लिखा हुआ है, आप लिखते चलिएगा. 43716, 43716, 2 एंड 5. ठीक है, चलते हैं अब अपने मेन एक्सरसाइज की तरफ. अगेन ये एक्सट्रैक्ट है आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. First question is, the poet has used a metaphor in brush strokes of seeds. Which options from those given below uses a metaphor? तो जो options given below है उसमें metaphor कहाँ use किया है? So answer is option number B. She has a heart of gold. चलते हैं अपने next question की तरफ हम. Complete the sentence appropriately. The phrase planted true is significant because it implies dash. So the answer is seeds sown with sincerity, care and faith in growth. Question number 3 is why has the poet used the word hue instead of colors in the extract? So answer is here. Hue suggests variety, richness and subtle shades, not just plain colors. It adds depth to the imagery, showing spring's blossoms as a vibrant spectrum. Now question number 4 is complete the following analogy correctly with a word from the extract. Summer is too hot. Similarly,
Spring is to vibrant. Now fifth is read the assertion A and the reason R and select the option that is correctly suited. A is assertion is gardeners wait for spring and reason is gardens are worth painting in spring. So the answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. चलते हैं अपने सेकंड वाले एक्सट्रैक्ट की तरफ. सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर्स टू इन दिस एक्सट्रैक्ट. सो द आंसर इज इट रेफर्स टू एवरी गार्डन बेड or piece of land where seeds are sown and plants grow. Second question is select which option imitates the rhyme scheme of the extract. So answer is A, beautiful and clear, laughter and cheer. Question number 3 is select the line from the extract that conveys that gardening blends aesthetic beauty with natural growth. So the answer is the line is where art and life coincide. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 is complete the following sentence appropriately. The plot is likened to a canvas suggesting that answer is gardening is a creative act where nature itself becomes art. Now fifth is why has the poet most likely used the word wide instead of long in canvas wide. So answer is over here. Wide conveys expansiveness, openness and variety, reflecting the broad scope of creativity and life in garden. Long would only suggest length, but wide suggests vast inclusive space for art and nature to merge. ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गए. अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड. तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है गिव रीजंस फॉर द कंपैरिजंस मेड बाय द पोएट इन द पोएम. अब इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ. इसके आंसर्स है यहाँ पर. फर्स्ट वन इज अ पेंटर इज कंपेयर्ड टू अ गार्डनर बिकॉज. ठीक है, because both create beauty. A painter uses colors and brushstrokes while a gardener uses soil, seeds and plants. The gardener, like a painter, shapes and designs something that grows into a masterpiece. Now second one is उसी question का सिमिलर जो वहाँ पे question था उसी का second है a palette is like earth as. So the answer is a painter's palette holds colors while the earth holds possibilities in form of seeds. Just as colors combine to make art, soil nurtures seed to create living art in garden. Third question है the brush strokes are like seeds because. Answer is seeds when sown spread across the soil like brush strokes across a canvas. Each seed contributes to the overall picture of the garden, just as each brushstroke contributes to a painting. Fourth question is a canvas is similar to a garden plot as. Answer is both are spaces for creativity. And here I have given the definition of canvas. It is a canvas is where a painter expresses art while a garden plot is where a gardener expresses beauty through plants and flowers. तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन गिव रीजन वाला वो खत्म होता है. अब चलते हैं हम अपने मेन एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग की तरफ. आंसर द फॉलोइंग में है हमारे 6 क्वेश्चंस. ठीक है, मैं 6 के 6 आपको बता देती हूँ, देन हम अपनी वोकैबुलरी वाले पोर्शन में चलेंगे. आंसर द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द मेटाफोर ब्रश स्ट्रोक्स of seeds enhance the understanding of gardening as an art. So the answer is the metaphor brushstrokes of seeds shows that planting seeds is not just a routine act but a creative one. Just as brushstrokes shape a painting, seeds shape the garden. This comparison helps us understand that gardening is like painting with life, where each seed contributes to the overall beauty of the garden. Now, question number 2 is what can you infer about the poet's perspective on the relationship between nature and creativity from the lines each plot a canvas wide
where art and life coincide. So the answer is, from these lines, it can be inferred that the poet sees nature and creativity as inseparable. A garden is both a natural space and a work of art. The poet believes that human effort and imagination blend with the vitality of plants, making gardening a union of art and life. Now, moving towards our question number three. Question number three is, do you think the imagery in the poem successfully paints a vivid picture in the reader's mind? If yes, why? If no, why not? So the answer is yes. The imagery in the poem successfully paints a vivid picture because the comparison to the canvases, brushstrokes, blossoms, and hues allow readers to visualize gardens as living paintings. The descriptive language makes the garden appear colorful, fresh, and artistic, which appeals strongly to the imagination. Now, question number four is, support the view that the poet's mention of color yellow besides red, blue, and green would have lent effectively to the imagery. So, the answer to this question is, the mention of yellow would have added brightness and cheerfulness to the imagery. Yellow symbolizes sunlight, warmth, and joy. Including it alongside red, blue, and green would have made the palette of nature more complete and lively, enriching the visual effect of the poem. Question number five is, considering the line, gardens becomes painting still. What can you interpret about the poet's view on the timelessness of nature's beauty? So the answer is, the line suggests that the poet views nature's beauty as timeless and enduring. Just like a painting that remains preserved, gardens hold their charm across seasons. The poet believes that the beauty of nature does not fade but continues to inspire and delight, making it everlasting. And the last question is, justify the title of the poem Canvas of Soil. So the answer is, the title Canvas of Soil is justified because the soil is portrayed as a painter's canvas, seeds as brushstrokes, and the garden as the final artwork. The gardener becomes the artist, and nature provides the colors. The central metaphor captures the essence of the poem, showing how gardening is an act of creativity where art and life merge to form masterpieces. तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स. आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जैसा मन करे आप वैसा कर लीजिए, पर कर लीजिए. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. इस वाली पोयम में ना ज़्यादा ग्रामर की एक्सरसाइज है नहीं, लेकिन हाँ, कल जो मैं आपको चैप्टर कराने वाली हूँ विटामिन ई, उसके लिए आप पेन, पेपर, रजिस्टर सब कुछ लेके बैठना, क्योंकि कल बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको. लेकिन अब चलते हैं अपने राइटिंग टास्क की तरफ. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ 2 or 3 paragraphs describing the details and colors in the garden you have visited. Focus on how different shades of blue, red, and green interact, create contrast, and bringing the garden to life. Pay attention to details like the texture of petals, the varying green of leaves, and the way light affects the colors. So आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है एक गार्डन का. तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया है. अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने आप भी लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने लिखा है तो मैं एक बार को रीड करके आपको सुना देती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लिखना, नहीं लगे तो आप अपने आप लिख लेना. When I visited the garden last spring, it looked like a vast canvas painted by nature itself. The roses stood proudly in shades of deep red, their petals soft and velvety, while clusters of morning glories added cool hues of blue that seemed to glow in the sunlight. The different greens of the leaves created a soothing background, some glossy and bright, other darker and rougher in texture, like varied brushstrokes on a painter's palette. The contrast between the red blossoms and the blue flowers made the garden appear alive, as if colors were conversing with one another. Second paragraph is, as I walked further,
I noticed how the light changed the scene. In the morning, the sun's golden rays gave the petals a gentle shine, while by afternoon, the same flowers looked sharper and more intense. The hues of green shifted with the angle of light, creating depth and movement almost like an artist layering shades to bring a portrait to life. The garden was not just a collection of plants. It was living painting where colors, textures and light blended together to create beauty that felt timeless. तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो और अगर आप अपने आप लिखना चाहते हो तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। वैसे अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा, ये तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बट स्टिल अपने आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहीं तक हमारा आज का ये कैनवास ऑफ सॉइल जो पोयम है उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स है। वीडियो में ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी बहुत लंबा लंबा कर चुके हैं, बड़े बड़े वीडियोस हैं वहाँ पर, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। बट हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट के जवाब ज़रूर देती हूँ। और हाँ, कल थोड़ा टाइम निकाल के बैठना क्योंकि चैप्टर नंबर 4 विटामिन एम के आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी इसकी एक्सरसाइजेज हैं और थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा कल इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसे करने में। ठीक है, तो इतना ही था हमारा कैनवास ऑफ सॉइल्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज, आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर करो ताकि नेक्स्ट सेशन चालू होने से पहले उनके पास भी थोड़े से रिसोर्सेज हों, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ सके। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे विटामिन एम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।